कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इम्तिहानात करीब आते जाएंगे आपको गैस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश का 10th क्लास का गैस पेपर। इससे पहले जो गैस पेपर अपलोड किए गए हैं उनमें से 2022 में 23 में 100% वही सवाल आया और बच्चों ने उनसे तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल किए हैं। तो चलते हैं 2024 के गैस पेपर की तरफ। तो सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर नंबर 1 के। फर्स्ट है व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। तीसरा है हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। चौथा है हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल फॉर ऑल मैनकाइंड। पांचवा हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। सिक्स है व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा चैप्टर है व्हाई डिज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज। दूसरा सवाल है व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट। व्हाई डिड चाइनीज फैमिलीज डू थ्रो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउस बिफोर न्यू ईयर्स डे। चौथा है विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर, व्हाई। पांचवा है व्हाट डू डेकोरेशन ऑन डोर एंड विंडोज symbolize, what is the significance of New Year's Eve dinner. What do the little red envelope filled with money symbolize? What is the importance of Chinese New Year for Chinese families. यूनिट 3 जो है वो पोइम है why is trying again important in life. Why is the poet repeating the sentence try again. क्वेश्चन 4 है फर्स्ट एड, यूनिट नंबर 4 है फर्स्ट एड। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई इज द नेसेसरी टू कीप अवे फ्रॉम द वाउंड, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ointment good in healing the wound, what should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandage, when do you need to see a doctor. नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 6 टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेजी। 2 हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। 3 हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड while watching TV news. 4 in what way viewing news on TV is easier than reading on newspaper. How do newspaper give us more in-depth coverage? Why do some people read more than one newspaper? How can reader give feedback to the newspaper articles? 8 है which medium do you prefer for news. यूनिट 7 है little by little ones walk for. Question number 1 what has motivated the author to participate so actively. What are some distinctions of the writer? How has the writer spent his summer vacation? What has he gained from his summer job experience? How are these experiences helpful to him in future? What kind of student is the writer? Which of his qualities impress you? यूनिट नंबर 8 से एक सवाल है हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन माइंड इज स्टिल। यूनिट 9 से है फ्रेज को जो है एक्सप्लेन करना है प्रॉफिटेबल लिवलीहुड। What were some famous career for the young people in the past? Third, nowadays non-traditional career are more appealing to young mind. Why? What is mean by right profession? Why is it important to consider the scope of any field? Is there any need of proper career counseling department? Why? How can career counselors help the young people?
Unit 10, a word without book. How does a book connect the reader and the writer? दूसरा है, in what way are book better than radio, TV and internet? Why should people be given more opportunity to read? The factor responsible for diverting people attraction from book. Unit 11, what kind of a boy was Pip? How did Pip become successful businessman? Who looked after Pip after the death of his parents? Who was Joey? How did he treat Pip? Why did Pip give food and drink to the prisoner? What happened to the prisoner? Unit 12. What does the word depleted mean? Do you also face shortage of water in your locality? Why? How is fossil energy a finite resource? Which areas are more affected by incessant growth in population? Why are developing countries going to suffer more due to overpopulation? What is the major cause of food shortage and malnutrition? How are water resources under great stress? What is the limitation of improved technology? Unit 13. What case did the young man bring to Hazrat Umar? Why did the old man hurl a stone at the camel? On what condition was the criminal allowed to leave? Why were Shabazz Raziallahu anhum worried? How did the accusers forgive the villagers? ये नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और ये सारे जो क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन में से ही हैं। तो आपने ये सारे जो ऊपर मैंने बताए हैं ये सारे आपने याद करने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम चल लेते हैं पैराग्राफ्स की तरफ जो कि है ट्रांसलेशन के लिए। यूनिट 1 से जो है पहला पैराग्राफ, हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, ये वाला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट नो वन कुड बी मोर जस्टिस एंड इक्विटेबल दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तीसरा है एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। चौथा ड्यूरिंग द सरमन। ये वाले जो है 4 पैराग्राफ चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से है प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, ये पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट, अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर। तीसरा है इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड envelope। चौथा है एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, वाई ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट। तो ये 2 पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। तीसरा है आफ्टर यू क्लीन द वाइंड अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक, ये भी इंक्लूड है। इसके बाद है चैप्टर 6, न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर, ये है पैराग्राफ। दूसरा है न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस, ये वाला। और ईच मीडियम हैज स्ट्रेंज दैट द अदर डज नॉट। यूनिट 7, द लास्ट कपल ऑफ ईयर हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. I order to gain an understanding of independence and responsibility. I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. ये 4 पैराग्राफ। यूनिट 9 जो है टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक फास्ट। सेकंड जो है स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म ऑफ मार्केट डिमांड शुड बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली। तीसरा है कैरियर कंसोलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड।
चौथा है, so before deciding on any career, make sure that you do not only earn money from your career but also mental peace. Unit 10, literature is the story of humans. दूसरा है, books are source of comfort for us. तीसरा है, books offer other types of pleasure as well. यूनिट 11 की तरफ चलते हैं. द स्टोरी बिगेन व्हेन पीप वाज अ लोनली ऑर्फन. दूसरा है, पीप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन. यूनिट 12, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज. पहला जो है पैराग्राफ, द अलार्मिंग एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. Water is another critical atom for all crops. Strategies for the future must be based on the conservation and careful management. ये 3 पैराग्राफ. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 13. Once Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु sitting in the masjid, ये वाला, and the Khalifa looked at the young man and said, ये वाला. The third day dawned, तीसरा ये, और चौथा, when the whole court was in worried state of mind, the villager reached there, ये वाला. और पांचवा है, on hearing this word the audience present in court, ये पैराग्राफ. आगे है important summaries, try again, the rain and peace. Stanzas, इनकी ट्रांसलेशन को आपने नहीं करना, आपने समरीज याद करनी है, क्योंकि ये स्टैंजास जो होते हैं इनमें से नंबर ज़्यादा काटते हैं. नेक्स्ट है एसेज. तो यहाँ पर ये मोस्ट रिपीटेड एसेज वाले जो हैं, ये वाले आपने देख लेने हैं. कौन से हैं? माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कोर्टेसी, हेल्थ, सीन एट रेलवे स्टेशन, हॉकी मैच, ट्रू मुस्लिम, और लाइफ इन अ बिग सिटी, विलेज लाइफ, टेलीविज़न, कायदे आज़म, माई फेवरेट बुक, एम्बिशन, हॉबी, बेस्ट फ्रेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्शनरी, एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन exemplary judge, the influence of electronic media on print media. और most important paragraphs, my school's girl guide, visit to museum, a river in the flood, a pleasant dream, how to keep street corral, how to keep our town clean, my neighbors and visit to hospital, road accident, picnic, street quarrel, a visit to historical place, Allama Iqbal, teacher I like the best, a house on fire, Pakistani woman.